Step 3. Setting up the server-side WebSocket in Next.js. Next.js uses its API routes to manage server-side logic, which is where we'll handle the WebSocket connections. Create a new API route. Pages. I don't think it uses pages anymore. So I'll just write app. Right inside app, API. Socket.js. Why JS like yes? We don't use JS yet. Import server from Socket.io. Nice. Export default function. It's a handler function. Request and response. If no response, socket.server.io. Starting socket.io server. Then creating a new instance of the server. Sending the response. Socket server. Wait, what? On connection event, user connected with ID. On message, broadcast emit, add message to everyone, except sender. Socket.on disconnect, user disconnect. Damn, that's easy. Export default function handler request response because these are the things. If if there's no request dot socket, sorry, not request, response dot socket dot socket.io server dot io. It's possibly null. Okay, log starting socket.io server. Then you actually start the server on the new server and pass down the response.socket.server. I guess. Response.socket socket socket.server.io goes to io io.on connection and do a like socket and do a oh sorry console log it that a new user connected. User ID would be a socket.id
Then on message io dot on message again do one thing, take the socket and just broadcast connect. No, in this the message will come. Just socket dot broadcast dot emit message then oh, not IO, it's socket on. Okay, nice. Socket on disconnect. Just take nothing and log it that user disconnected. Okay, I guess. Oh, I'm passing now. Socket.ip. I guess, okay, no problem. I don't care. At the end, we have to say rest.end. What are the things wrong here and how can I improve the code? One more question. Why I am writing socket dot on after IO dot on. Did you change or not? লগ করলাম ও মেসেজ এমিট করব এই মেসেজটা remove the trailing space in the name event name. There was a trailing space. Right. This one. Okay. Suggested in sending is used to listen for events that are emitted by the specific. Oh. From that client. IO is the total server, socket is that specific socket. Nice. Understood.
একটা ইন্টারফেস বানাবে, আমি বললাম আই নিউ এটা তোর বাড়াবেই। Like, এখানে নেই, we will just declare interface extending it. Hey.
Oh, I was feeling lonely, so I bought myself a cat. Me? Sorry. Now we'll set up the client-side connection to the WebSocket server. In your Next.js app, create a chat component, convert it to a chat. Chat. So what is this code actually doing? We are using use effect, so why not use the use server, use client directive. ইউএচি socket variable নিচ্ছি প্রথমে একটা chat message set message is a chat of listen for messages from server socket or message প্রথমে message যেটা আছে emit করছি এটা previous এর সাথে add করে দাও return socket disconnected just return send message whenever I have a message and I want to send to the server in socket.emit that was broadcast.emit. This is only emit with the message and the message. This is the event and this is the actual message payload. Send message again, like adding my message to the chat. Okay, in the backend I am not sending the message to myself. Okay. Send message, clear input fields. Okay, done. Understood. Pretty much. It's easy from here. The client side code is actually pretty easy, but what? Bro, I think this is broken. No idea. This div is this d. Oh, why
properly or oh no, it is broken. This is dot map, we are mapping it. The div is getting mapped. The key is this. The message is in the body. Okay. Where is it expecting? Anyways, there's a div, the each one is closed. Okay. This is the div with the corresponding div. Nice. Sending the index, no worries. Yeah, okay. Then the input has this fields. And on change, it has an event. Set message, target or value. Okay, I guess. There's this placeholder. Type a message. Button is there. We can let div is close. Yes. This thing is closed. So what is the error? Let's clear the error. I can't deal with this one. Bro, what is the error? Why? I'm writing this my own way. Why? This is giving me BT. Like pure. This is TS, not TSI. That's why. I'm sorry. I am so sorry. Yes.
application. Nice. Application. This part is done. Hmm. Let's see what it says. Yep, this is done. This is done. Wait, what? This is so cute. I think I have to do this part. I don't know. Let's run it. Wait, what? What was it? Oh. Lol. Let's see. Oh my god. Will it work or will it not? My PC is absolutely fine. Work, brother, work. By the way, I didn't use this in my page. Lol. Nice. Nice. Oof. Seriously. Sorry, client cannot be found. Is this because of use effect? I don't think it should complain anymore, but let's see.
Compiling error. Compile error. Get 500. Why? Socket. I think this node module is outside. Maybe. I think so. But I don't see any node modules inside this or outside this. CD socket IO done. Okay. This was inside client. Lol. But where is the node module of it? I don't see it. Which socket I own? There is no node module. Wait, what? Compiled. Don't forget 5. Okay. Nice. Polling 404 not found. अबे यार, did I tell you to switch tabs? अरे tabs बोले ना. Will it work? Will it work? Please, please. Let me see. Hello, someone. I don't think it's working. Login.io transfer polling 404. The server is not initiating. But why? Let's see this. It's from 9th December. Let's see it anyways. I don't care. At least I'll understand what I'll be doing. Not like blindly following AI. Oh my god, it's so lagging. Bro. Oof. Now it can't breathe. Let's learn a bunch of stuff today, then I'll implement something. Because this is getting boring, because when I'm not understanding the concepts and just following the code from AI, it gets boring. Bro, why is it so slow? It's taking so much CPU. Sorry, my love, I have to terminate you.
Nice. Ay. हे एवरीवन, वेलकम बैक। वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो। एंड इस वीडियो के अंदर हम बिल्ड करने वाले हैं एक फुल स्टैक चैट एप्लीकेशन जो बिल्कुल स्केलेबल होने वाला है। यस, तो चैट एप्लीकेशन तो हमने बहुत बार बिल्ड किया होगा, लेकिन कभी भी हमने वेब सॉकेट स्केलिंग के बारे में नहीं पढ़ा होगा, दैट आई एम श्योर। तो इस वीडियो का मोटिव क्या है? इस वीडियो का मेन मोटिव ये है दैट किस तरह से हम वेब सॉकेट्स को सॉकेट्स को यूज करके रियल टाइम एप्लीकेशन बना सकते हैं। एंड मेनली किस तरह से हम वेब सॉकेट्स को स्केल अप कर सकते हैं यूजिंग Redis। ओके, सो दैट इज द मेन मोटिव ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो। तो इस वीडियो का जो टेक स्टैक होने वाला है वो होने वाला है, हम यूज करने वाले हैं टर्बो रिपो, Next.js, Node.js एंड A1 प्लेटफॉर्म फॉर आर डेटा मैनेजमेंट। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं दैट हमारा आर्किटेक्चर क्या होने वाला है, हम किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। मैंने टाइम स्टैम्प्स इंक्लूड कर दिए, जस्ट इन केस यू वांट टू स्किप टू द कोडिंग पार्ट, फील फ्री टू डू सो। ओके, लेकिन हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हमारे आर्किटेक्चर को समझने से। तो ये हमारा टेक स्टैक है, राइट। तो ये हम अपना टेक स्टैक यूज करने वाले हैं। तो इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हमारा मोटिव क्या रहने वाला है दैट लेट्स से हमारे पास कोई भी एक रियल टाइम एप्लीकेशन है, राइट। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं चैट एप्लीकेशन की। ओके, तो चैट एप्लीकेशन के केस में ट्रेडिशनली जितने भी आपने यूट्यूब ट्यूटोरियल वीडियोस देखे होंगे, उसमें ट्रेडिशनली क्या होता है, यू हैव अ सर्वर, राइट, जिसके अंदर कोई भी एक वेब सॉकेट सपोर्ट होता है, मे बी सॉकेट डॉट आयो, या फिर हम वेब सॉकेट्स को भी यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो लेटर से सॉकेट डॉट आयो को हम यूज़ करते हैं। एंड देन क्या होता है, लेटर से ये हमारे क्लाइंट्स हैं, ओके, हमारे यूजर्स हैं। सो लेट से ये हमारा एक यूज़र 1 है, ये हमारा एक यूज़र 2 है, ये हमारा एक यूज़र 3 है। तो उसको एक नाम देते हैं फटाफट, इसको हम बोल देते हैं यूज़र 1, इसको हम बोलते हैं यूज़र 2 एंड इसको हम बोल देते हैं यूज़र 3, राइट। एंड देन व्हाट हैपेंस, जितने भी क्लाइंट्स होते हैं हमारे, जितने भी हमारे यूजर 1, यूजर 2 एंड यूजर 3 होते हैं, ये जाकर कनेक्ट होते हैं, ये जाकर एक सॉकेट कनेक्शन बनाते हैं हमारे सर्वर के साथ, राइट। ये एक सॉकेट कनेक्शन बना रहे हैं हमारे सर्वर के साथ। एंड इससे हम अब क्या कर सकते हैं, हम रियल टाइम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल चैट मैसेजेस को शेयर कर सकते हैं रियल टाइम के अंदर। लेकिन लेकिन इस पर्टिकुलर आर्किटेक्चर के अंदर एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है दैट ये पर्टिकुलर आर्किटेक्चर कभी भी स्केल अप हो ही नहीं सकता। व्हाट डू आई मीन बाय दैट इज, लेट अस से अगर हम इस पर्टिकुलर सर्वर के ऊपर एक स्केलिंग सेटअप करते हैं, ओके, तो लेट अस से हमारा जो लोड है वो इंक्रीज हुआ, हमारे यूजर्स, नंबर ऑफ यूजर्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गए। तो उस केस में हम क्या करना चाहते हैं, हम एक और सिमिलर सर्वर को स्पिन अप करना चाहते हैं। लेट्स से ये हमारा क्या है, ये हमारा एक सर्वर 2 है, ओके, विच इज़ ओके, राइट। ये तो चीज़ ऑटोमेटिकली हो जाती है। तो लेट अस से हम अमेजोन को यूज़ कर रहे हैं, हमने कोई ऑटो स्केलिंग पॉलिसी सेटअप कर रखी है एंड मेरे सर्वर्स अपस्केल कर गए। अब लेट अस से एक और यूज़र हमारे प्लेटफॉर्म पर आता है एंड इस यूज़र का नेम है यूज़र 4। जैसे ही ये यूज़र कनेक्ट करने का ट्राई करेगा एंड लेट से ये यूज़र कनेक्ट होता है इस पर्टिकुलर सर्वर के साथ, सर्वर 2 के साथ, यहाँ पर एक्चुअल प्रॉब्लम स्टार्ट होती है दैट यूज़र 1 किसी भी केस में यूज़र 4 को मैसेज सेंड कर ही नहीं सकता, बिकॉज ये जो यूज़र 1 है ये अलग सर्वर के साथ कनेक्टेड है, ये जो यूज़र 4 है ये एक अलग सर्वर के साथ कनेक्टेड है। तो दिस इज द मेन प्रॉब्लम विद सॉकेट्स या फिर वेब सॉकेट्स कि वो स्केलेबल नहीं होते, उनको हम स्केल नहीं कर सकते। अगर यूजर 1 सर्वर 1 के साथ कनेक्टेड है, तो ये यूजर 1 सिर्फ उन्हीं उन्हीं के साथ कम्युनिकेट कर सकता है जो इस सर्वर के साथ कनेक्टेड है, दैट इज यूजर 2 एंड यूजर 3। ओके, ये यूजर 4 इनके साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकता बिकॉज ये अलग सर्वर के अंदर है, इनका कनेक्शन एक अलग सर्वर के। ओके, तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं, तो उसको हम इस पर्टिकुलर वीडियो में समझने वाले हैं। ओके, तो आर्किटेक्चर की बात करते हैं। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए हम यूज करने वाले हैं i1। ओके, i1 के, i1 बेसिकली एक डेटा प्लेटफॉर्म है, राइट। डेटा प्लेटफॉर्म इन द सेंस यू कैन स्पिन अप पोस्टग्रेस, यू कैन स्पिन अप माई सीक्वल, यू कैन स्पिन अप रेडिस, हम अपाचे कैसेंड्रा, किसी भी तरह का डेटाबेस, किसी भी तरह की सर्विस को बस एक क्लिक में अप एंड रनिंग कर सकते हैं। तो दैट इज द पावर ऑफ i1 एंड ये बहुत ही पावरफुल क्लाउड
इंफ्रास्ट्रक्चर है, ओके। एंड सबसे बेस्ट पार्ट क्या है दैट हमें कोई भी क्रेडिट कार्ड वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ इसके अंदर फ्री साइन अप करना है एंड हमें सारी सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी, ओके। तो इस पर्टिकुलर चीज़ को हम यूज़ इस आईवन को हम यूज़ करेंगे फॉर स्पिनिंग अप द रेडिस। सो हम हमारा आर्किटेक्चर क्या रहने वाला है दैट हम एक रेडिस सर्वर को स्पिन अप करेंगे आई1 प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो यहाँ पे हम लिखते हैं दैट ये हमारा एक रेडिस सर्वर है विच इज़ रनिंग ऑन आई1, ओके। एंड हम क्या करने वाले हैं, हम इन सर्वर्स को बेसिकली कनेक्ट करेंगे इन सर्वर्स के साथ, ओके। हम इन सर्वर्स को कनेक्ट करेंगे इन सर्वर्स के साथ एंड हम यहाँ पर यूज़ करेंगे समथिंग नोन एज पब सब मॉडल, ओके। पब पब सब आर्किटेक्चर को हम यूज़ करेंगे एंड हम देखेंगे दैट किस तरह से U1 U4 को मैसेज कर सकता है यूजिंग दिस इंटरमीडिएट पब सब मैकेनिज्म, ओके। तो ये हमारा एक बहुत ही ओवरव्यू आर्किटेक्चर है, ओके। तो स्टार्ट करते हैं। तो टेक स्टैक मैंने ऑलरेडी इंक्लूड कर दिया, नोट जेस नेक्स्ट जेस टर्बो रिपो एंड रेडिस ऑन आई1। तो इस चीज़ को हम यूज़ करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट, ओके। तो टर्बो रिपो से स्टार्ट करते हैं। टर्बो रिपो क्या है, बेसिकली मोनो रेपोजिटरीज को मैनेज करने के लिए एक बहुत ही अच्छा टूल है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा क्रिएट अ न्यू मोनो रिपो एंड हम यूज़ करेंगे npx। तो ये हमारे कमांड है जिसको हमें रन करना है। तो फटाफट हम अपने कंप्यूटर पे जाते हैं, हम अपना टर्मिनल ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं जाऊँगा कोडिंग फोल्डर के अंदर एंड मैं यहाँ पे कमांड एग्जीक्यूट करूँगा दैट इज npx create हाइफन टर्बो एट द रेट लेटेस्ट, ओके। एंटर। ये क्या करेगा, मेरे लिए एक टर्बो रिपो प्रोजेक्ट सेटअप करेगा। तो सबसे पहले हम नाम देते हैं हमारे एप्लीकेशन का। तो इसको हम बोल देते हैं स्केलेबल, ओके, स्केलेबल चार्ट, ओके। एंटर। उसके बाद हमें क्या यूज़ करना है, मुझे ना यान वर्क स्पेसेस ऐड करना है, ओके, यान वर्क स्पेसेस। एंटर। तो अब ये क्या करेगा, जितनी भी फाइल्स डाउनलोडिंग है जैसे टाइप स्क्रिप्ट सपोर्ट एंड ऑल, वो सब मेरे लिए ऑटोमेटिकली ये यहाँ पर डाल देगा, ओके। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा वेट करते हैं एंड लेट्स वेट फॉर द डिपेंडेंसीज टू गेट इंस्टॉल्ड, ओके। सो मेरी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल हो चुकी है। अब हम जाएंगे cd इनटू द स्केलेबल चैट एंड यहाँ पर मैं करूँगा कोड डॉट, जिससे क्या होगा, मेरा VS कोड ओपन हो जाएगा, राइट। तो जैसे मैंने कोड डॉट किया, मेरा VS कोड कहाँ पर है, हेयर इज़ माय VS कोड। तो ये मेरा VS कोड ओपन हो चुका है एंड व्हाट यू विल नोटिस इज दैट यहाँ पर हमारे पास ना बहुत सारी फाइल्स हैं, ओके। सो डोंट वरी, एक एक करके इन फाइल्स को समझते हैं दैट ये क्या है। बेसिकली मोनोरिपो का मतलब क्या होता है दैट हम एक ही रिपोजिटरी के अंदर, एक ही कोड बेस के अंदर हम अपना बैक एंड रख सकते हैं, फ्रंट एंड रख सकते हैं, लाइब्रेरीज रख सकते हैं एंड उस चीज़ को मैनेज कौन कर रहा है, टर्बो रिपो, ओके। तो यहाँ पर ऐप्स के अंदर इसने मेरे लिए क्या किया, एज अ बॉयलर प्लेट इसने मेरे लिए एक वेब ऐप सेटअप कर दिया विच इज़ अ नेक्स्ट कोड एंड इसने मेरे लिए एक डॉक्यूमेंटेशन कोड भी सेटअप कर दिया विच इज़ अगेन अ नेक्स्ट कोड। तो ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, दोनों की अपनी पैकेज डॉट जेसन है, कैन यू सी, दोनों की अपनी पैकेज डॉट जेसन है। सो दिस इज द पावर ऑफ टर्बो रिपो, ओके। अगर हम इसको स्टार्ट करना चाहते हैं, हम बस क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर एक कमांड लिखेंगे यान डेव। ये क्या करेगा, जितने भी मेरे प्रोजेक्ट्स होंगे उन सबको ये अप एंड रनिंग कर देगा। सो नाउ यू कैन सी मेरे डॉक्यूमेंटेशन सर्वर भी चल रहा है, मेरा वेब सर्वर भी चल रहा है, ओके। तो एक बार वेब सर्वर में देखते हैं दैट व्हाट इज इन आवर वेब सर्वर। तो वेब सर्वर के अंदर कुछ नहीं, एक सिंपल बॉयलरप्लेट नेक्स्ट जेएस का कोड होना चाहिए। तो यू कैन सी दैट ये सिंपल एक क्या है, नेक्स्ट जेएस का कोड है एंड क्लिक मी पे हेलो फ्रॉम योर वेब ऐप, ओके। दैट्स कूल। सो दिस इज वर्किंग गुड, राइट, ओके। सो दिस पार्ट इज कूल। ये कहाँ से आ रहा है, ऐप के अंदर, वेब के अंदर ऐप एंड यहाँ पर पेज डॉट जेएस एंड अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ क्लिक मी, सो दिस इज द क्लिक मी, ओके कूल। तो सब कुछ बंद करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम अपना प्रोजेक्ट सेटअप करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मुझे एक नोड जेएस सर्वर चाहिए, ओके। मेरे को एक नोड जेएस का सर्वर चाहिए। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ऐप्स के अंदर हम एक फोल्डर बनाएंगे, इसको हम नाम देंगे सर्वर, ओके। एंड इस सर्वर के अंदर लेट्स मेक अ पैकेज डॉट जेसन फाइल, ओके। इस पैकेज डॉट जेसन के अंदर हमें कुछ चीज़ें हैं जो हमें इंपॉर्टेंटली देनी है। नंबर वन इज नेम, तो इसको हम नाम देते हैं सर्वर, ओके, नेम इज सर्वर। एंड उसके बाद सेकेंड चीज़ जो हम दे सकते हैं, वो हम दे सकते हैं यहाँ पर एक वर्जन, ठीक है। तो वर्जन हम दे देते हैं 1.0.0, जैसे हम वेब में देते हैं, राइट। तो वेब में हम कैसे देते हैं 1.0.0 एंड एक हमें देना है प्राइवेट ट्रू, दैट्स इट,
ओके, तो हम यहाँ पर करते हैं कॉमा एंड प्राइवेट रो, दैट्स इट। इतना ही हमें करना है, बाकी हम सब चीज़ें कैसे मैनेज कर सकते हैं, हम मैनेज करते हैं हमारे कमांड लाइन के थ्रू। अब सी व्हाट आई कैन डू इज़, लेट अस से मुझे इस पर्टिकुलर जगह पे कुछ भी इनिशियलाइज़ करना है, जैसे मुझे टाइपस्क्रिप्ट को इंस्टॉल करना है, ओके? तो यहाँ पर व्हाट आई कैन डू इज़, पहले हम अपने पैकेज.जेसन फाइल के अंदर जाएँगे एंड यहाँ पर वर्कस्पेसेस के अंदर यू कैन सी ऐप्स के अंदर जितने भी फ़ोल्डर्स हैं वो हमारे वर्कस्पेस के अंदर है। नाउ आई कैन से यार्न वर्कस्पेस, ओके, यार्न वर्कस्पेस, मेरे वर्कस्पेस का नेम क्या है? इस वर्कस्पेस का नेम क्या है? सर्वर, करेक्ट? यहाँ पे मैं बोलूँगा सर्वर एंड आई कैन से ऐड एंड आई कैन से टाइपस्क्रिप्ट एंड -d एज़ अ डेव डिपेंडेंसी। जैसे मैं यहाँ पे एंटर करूँगा, व्हाट यू विल नोटिस इज़ दैट ये ऑटोमैटिकली क्या करेगा, टाइपस्क्रिप्ट को मेरे इस सर्वर के लिए इंस्टॉल कर देगा, राइट? सिमिलरली हमें एक और पैकेज को इंस्टॉल करना है, दैट इज़ tsc-watch, ओके? तो tsc-watch, इससे मैं क्या कर सकता हूँ, इससे बेसिकली मैं टाइपस्क्रिप्ट को वॉच मोड के अंदर कंपाइल कर सकता हूँ, तो इसकी भी हमें ज़रूरत पड़ने वाली है, तो इसको भी हम इंस्टॉल कर लेते हैं, राइट? दैट्स कूल। अब हम एक काम करते हैं, सीडी करते हैं ऐप्स के अंदर एंड यहाँ पर हम जाते हैं सर्वर के अंदर एंड यहाँ पर एक कमांड एग्जीक्यूट करेंगे tsc-init, जिससे मेरी एक टाइपस्क्रिप्ट कॉन्फ़िगरेशन फाइल बन जाएगी, ओके? इस टाइपस्क्रिप्ट कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर हमें कुछ चीज़ें चेंज करनी है, दैट इज़ द रूट डायरेक्टरी। तो हमें अपनी रूट डायरेक्टरी को चेंज करना है सोर्स में एंड हमें यहाँ पे एक और चीज़ सर्च करनी है, दैट इज़ आउट डायरेक्टरी कि यार कंपाइल करके मेरा सारा कोड डिस्ट फ़ोल्डर के अंदर डाल दो, दैट्स इट, ओके? अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर एक सोर्स फ़ोल्डर बनाएँगे, ओके? तो जितना भी हमारा टाइपस्क्रिप्ट सर्वर का कोड होगा, वो सारा इस पर्टिकुलर फ़ोल्डर में जाएगा एंड उसके बाद यहाँ पर हम कुछ स्क्रिप्ट्स को यूज़ कर सकते हैं। तो पहली स्क्रिप्ट होने वाली है डेव, तो डेव स्क्रिप्ट होती है इस पर्टिकुलर सर्वर को डेवलपमेंट मोड के अंदर चलाने के लिए। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे tsc-watch जो हमने अभी इंस्टॉल किया था एंड देन आई कैन से ऑन सक्सेस मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर आई कैन से दैट नोड एंड आई कैन से dist/index.js, ओके? तो ये क्या करेगा, टाइपस्क्रिप्ट को वॉच मोड में कंपाइल करेगा एंड जब वो कंपाइलेशन हो जाएगी मेरे सर्वर को बार-बार ही रीस्टार्ट कर देगा, ओके? सो दिस इज़ कूल एंड उसके बाद हम यहाँ पर एक स्टार्ट स्क्रिप्ट भी बना लेते हैं व्हिच इज़ लाइक नोड dist/index एंड हम यहाँ पर एक और चीज़ कर सकते हैं, दैट इज़ बिल्ड, ठीक है? बिल्ड कमांड भी बना लेते हैं, तो बिल्ड कमांड होने वाली है हमारी tsc-p डॉट, ओके? एंड दैट्स इट, ओके? तो फटाफट स्टार्ट करते हैं हमारे कोड को करना, पहले हम सर्वर के ऊपर कोड करते हैं। तो सर्वर के ऊपर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक index.ts फाइल बनाऊँगा एंड यहाँ पर हमें अपना कोड करना है, ओके? तो एक काम करते हैं, सबसे पहले टेस्ट करते हैं एवरीथिंग इज़ वर्किंग गुड, तो यहाँ पर मैं बस एक कंसोल लॉग लगा देता हूँ, हेलो फ्रॉम सर्वर, ओके? सो लेट्स सी इफ एवरीथिंग इज़ वर्किंग गुड। जैसे मैं करूँगा yarn dev, लेट्स सी इफ एवरीथिंग इज़ वर्किंग, yarn dev हेलो फ्रॉम सर्वर, येस एवरीथिंग इज़ वर्किंग गुड, करेक्ट? तो अभी मैं कहाँ किस प्रोजेक्ट के अंदर हूँ, मैं अभी ऐप के अंदर था, तो यहाँ पे cd डॉट करते हैं एंड फिर से cd डॉट करते हैं, pwd मैं अपने रूट फ़ोल्डर में हूँ। अब अगर मैं यहाँ पे yarn dev करता हूँ, तो टर्बो रिपो क्या करेगा, मेरे सारे कोड्स को एग्जीक्यूट करेगा, ओके? इसने मेरे वेब डेव को भी चला दिया, इसने मेरे सर्वर को भी चला दिया, इसने मेरे डॉक्यूमेंटेशन को भी चला दिया। सो दिस इज़ रियली कूल फॉर टर्बो रिपो, ओके? तो लेट्स स्टार्ट विद कोडिंग, ओके? तो पहले हम यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे http फ्रॉम http बिकॉज़ मुझे एक http सर्वर चाहिए। यहाँ पर हम करेंगे एक एसिंक फंक्शन एंड एक फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन init, ये हमारे पूरे सर्वर को इनिशियलाइज़ करेगा, राइट? तो यहाँ पर आई कैन से कॉन्स्ट http सर्वर इक्वल्स टू http डॉट क्रिएट सर्वर, ओके? तो ये मेरा सर्वर क्रिएट करेगा। उसके बाद हम पोर्ट को लेते हैं, तो पोर्ट विल बी लाइक हम पहले चेक करेंगे दैट अगर हमारे प्रोसेस डॉट एनवायरनमेंट डॉट पोर्ट, अगर हमारे पास प्रोसेस डॉट डॉट पोर्ट है तो हम इसको यूज़ करेंगे, एल्स हम क्या करेंगे, हम 8000 को एज़ अ डिफ़ॉल्ट पोर्ट यूज़ करेंगे, ओके? उसके बाद व्हाट आई कैन डू इज़ आई कैन से एचटीटीपी सर्वर जो मेरा सर्वर है उसको हम बोलेंगे लिसन कि एक काम करो इस पोर्ट के ऊपर करो लिसन एंड देन फाइनली आई कैन से कंसोल डॉट लॉग एंड आई कैन से एचटीटीपी सर्वर स्टार्टेड एट पोर्ट, ओके? एंड उसके बाद हम यहाँ पर अपना पोर्ट देते हैं, दैट इज़ दिस पोर्ट। तो ये पर्टिकुलर जो चीज़ है, ये पर्टिकुलर चीज़ क्या करेगी, हमारे पोर्ट्स को इनिशियलाइज़ करेगी एंड हमारे सर्वर को इनिशियलाइज़ करेगी, राइट? एंड यहाँ पर हम इनिट फंक्शन को कॉल करते हैं। तो एक बार फटाफट चला के देखते हैं, अगर मैं यहाँ पे yarn dev करता हूँ, इज़ एवरीथिंग वर्किंग गुड? तो yarn dev किया एंड एचटीटीपी सर्वर स्टार्टेड एट पोर्ट 8000, दैट्स कूल, तो एवरीथिंग इज़ वर्किंग वेरी गुड, ओके? तो पहले काम करते हैं, इस पर्टिकुलर पूरे पार्ट को हम 2 पार्ट्स में स्प्लिट करते हैं, पहले हम पूरा बैकएंड क्रिएट करते हैं, फिर हम उसके बाद उसको फ्रंट एंड को यूज़ करते हैं, ओके? तो बैकएंड के लिए एक काम कर सकते हैं, हम socket.io का यूज़ करेंगे, ओके? तो हम socket.io का यूज़ करेंगे फॉर मेंटेनिंग दीज़ कनेक्शंस। तो socket.io क्या है? socket.io बेसिकली एक सॉकेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी है, दिस इज़ socket.io। तो गेट स्टार्टेड, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें socket.io को इंस्टॉल करना है हमारे सर्वर के ऊपर एंड वो हम कैसे करेंगे? हम बोलेंगे yarn वर्कस्पेस, ओके? वर्कस्पेस कौन सा वर्कस्पेस? सर्वर एंड उसके अंदर मुझे ऐड करना है socket.io। जैसे मैं ये करूँगा, मेरे वर्कस्पेस मेरे सर्वर के अंदर socket.io इंस्टॉल हो जाएगा एंड यू कैन सी socket.io इंस्टॉल हो गया। नाउ व्हाट आई कैन डू इज़ मुझे यहाँ पर socket.io को इनिशियलाइज़ करना है, राइट? तो उसके लिए काम करते हैं, थोड़ा-सा मॉड्यूलर वे में करते हैं, तो यहाँ पर एक सर्विसेज बनाते हैं एंड सर्विसेज के अंदर लिखा हुआ socket.ts, जितना भी हमारा सॉकेट सर्विस का काम होगा, वो इस पर्टिकुलर फाइल के अंदर हम रखने वाले हैं। तो लेट्स मेक अ क्लास एंड यहाँ पर आई विल से socket सर्विस, ओके? socket सर्विस, तो socket सर्विस के अंदर लेट्स हैव अ कंस्ट्रक्टर एंड इस कंस्ट्रक्टर के अंदर हम क्या करने वाले हैं, वी विल से import something from socket.io एंड मुझे यहाँ से इंपोर्ट करना है सर्वर, तो ये सर्वर कौन सा है, socket.io सर्वर, राइट? उसके बाद आई कैन से लेट अस से मेरे पास यहाँ पर एक होने वाला है प्राइवेट प्राइवेट एंड इसको हम नाम देते हैं आयो विच इज़ ऑफ टाइप सर्वर, ओके? तो ये मेरा क्लास का एक इंस्टेंस वेरिएबल है एंड यहाँ पर एक और चीज़ को हमें इंपोर्ट करना होगा, दैट इज सॉकेट सर्वर, yep, so that's cool. Now I can say this.io equals to new server. तो ये मैंने क्या किया, मैंने अपना एक सॉकेट आयो सर्वर इनिशियलाइज कर लिया एंड यहाँ पर एक काम करते हैं, थोड़ा सा कंसोल डॉट लॉग्स भी डाल देते हैं एंड आई से इनिट सॉकेट सर्वर, ओके? सो दैट हमें डीबग करने में थोड़ा सा आसान रहेगा। तो यहाँ पे मैंने किया इनिट सॉकेट सर्वर को हमने कर लिया इनिशियलाइज एंड ओके
Why is it lagging so much? I have no idea. At this point, this is just unbearable. Like, अरे यार. Not this one, not this one. I guess this was the one. Cursor was hogging up the memory. Damn it. F you, cursor. But it's still lagging. Nice. Please play, please. Hey, yaar. I'm gonna cry at this point. I guess everything's working fine except YouTube. I guess it's YouTube's fault. This is taking way too much space. In this video, you're going to be creating a real-time application using Node.js, Express, Socket.io, and on your front end, you're going to be using Next.js and Tailwind. This is what it's going to look like. We're going to have 3 different clients here. Finally. So whenever a user signs up, let's call this guy Bobby, we can see that the button color is going to change. You can press on it, or you can also press on enter, and all the other guys are going to get notified that Bobby has joined, and we can see that it's going to move the user down because we have a responsive container here that's going to move the conversation down every time the user types in something. So let's say Bobby says hello to greet everybody, and we're going to go here. We can see that it's going to scroll down for us, and this goes for every single other user, and we can also upload images here, and every user is going to get their own little icon here with their name. And another cool feature that this chat application is going to have is this nice typing animation. So if this guy starts typing hey or anything else, and we go down here, we can see this nice cool typing animation for every single user, and when he sends it, we can see his message, and the typing animation disappears. And I'm going to upload a quick image here, so I'm going to do this nice little send icon, and if we go to the other users, we're going to be able to see it just like any other image, and we can see that different images are going to have different sizes, and you can still save them. So if you right click and press on save image as, you can still save these images. And I still managed to forget stop, so here's going to be the image. So before we get started, make sure to like this video, subscribe to upcoming content like this, comment below if you actually want to see more videos like this, and if you do, then please leave a suggestion for something that you'd like to build. But now, let's get started. As always, go to your desktop, right click anywhere, and press on open in terminal. This is going to open CMD, and here we're going to write mkdir. We're going to call the folder real-time chat app. Let's cd to this folder, and we're going to write code period, which is going to open it in VS Code, as we can see over here. And here we're going to create 2 folders. The first one is going to be the client, and we're also going to create the server. And here we're going to go to view and open it in terminal. We're going to create node. Are we back? No to source directory, yes to app router, and no to import alias. Luck is not on our So it's going to start creating the Next.js app.
Now we're going to go to the server PowerShell and write cd server. And in here, we're going to write npm init-y, which is going to create a package.json file. Let's create a server.js file also, and we're going to install a few dependencies. So npm install, the first one is going to be Express, second one's going to be nodemon, and then we're going to be using socket.io. So let's install that. I'm going to go over what socket.io is and what it does later on. So after we initialize everything, so we have our server folder complete over here. Now we can go back to the client, and we're going to install the socket.io client dependency. So npm I socket.io, and this is going to be for the client. So let's install everything, and once that's done, we're going to see our client folder have all of our Next.js, and the server folder have our Node.js with Express. The next thing I want you to do is go to the description down below and open this Google Drive, which is going to have two folders. One's going to be an assets folder with all of the images, and then the second one is going to be a components folder. And I want you to go ahead and download this and copy and paste it inside of our client folder over here. So I'm going to go ahead and start with the components folder. I'm going to paste it inside of the clients folder. So we're going to see this components folder have a few React files with a div and some text. And so I created this so that you don't have to waste time on creating them. And then the next one is going to be the assets. So I'm going to go ahead and paste them in here too. Then we can see they're going to be basic SVJ files. And there's going to be one more thing I want you to do, and that's going to be to go to the GitHub repository, find the global.css file, and copy and paste it in here. We can see it's only going to be 56 lines, so it's nothing special. And let's go to the page.js and remove all of this boilerplate code. So go down into here and remove all of that. I'm going to remove this image import, and now we can start with our backend. And let's start by creating our server in the server folder. Before we create our server, I want to go over what socket.io is and what it's going to help us doing. So over here, it says that it's a library that enables low latency bidirectional and event-based communication between a client and a server. So we're going to be able to send different messages between our client and server, and it's going to make it a lot easier than using stuff like forms. You're going to see how it works soon enough. So if we just search it up on Chrome, socket, I forgot about the IO part, so socket.io, we're going to see a simpler explanation. So over here, it says it's a library for real-time web applications, which is exactly what we're going to be doing. It enables real-time bidirectional communication between web clients and servers. And now that you know the basics of socket.io, you're going to see how it works in just a second. We're going to have to start by creating our Express server. So we're going to start by writing const express, and we're going to require that from Express. Then we're going to get our app from the Express function. We do have to create a new variable, which we haven't created in the Node.js crash course. This one's going to be called HTTP, and it's going to be coming from HTTP. And then we have to make another one, which is going to be called server. And we're going to be using this HTTP variable, and we're going to create a server from the app. I'm going to fix this. And now we're going to get a server from the socket.io. So that'll be from acquire socket.io. And now we're going to be making a variable for that. So io is going to be new server. And I'm going to go over all of this in just a second. So we're going to be getting a server, and there's going to be a course with the origin being, I'm just going to set this to everything. And like I said before, we're going to go over all of this in just a second. And then down here, we can listen on whatever port we want to. So we're going to listen on port 3001, just because our Next.js is running on port 3000 here. Let's just console log server is running. Yeah, I know that. Our server user is connected, and then we can also write the ID of the user. So with ID socket.id. So every time a user connects to the server, we're going to be getting this console log. Now there's one more thing we have to do, and it's going to our page.js. We have to import IO over here, so IO, and it's going to be coming from socket.io-client, and in here we're going to create a variable called socket, where we're going to be sending our messages, and socket is going to be a connection to IO, and that's going to be coming from HTTP localhost 3001. Make sure that you change this to 3001, or it's not going to work. Now I'm going to go to the terminal. I'm going to run npm dev. This is going to start the client. Same goes for the server, and we're going to run npm run dev, and we can see that it's not going to work, so let's go to the package.json, change this to dev, and this command is going to run nodemon server.js. Let's run this again, and now it's going to work. So we can see that the server is running on port 3000. If we go to the client and go to this page over here, it's going to take some time, but it's going to start our Next.js app. And now if we go back to the server, we can see that we're going to get users connected with an ID of, and we're going to get a large string. So if we open another page, we can see that we're going to get a different connection, because that's going to be a different tab, and we're going to be able to send messages inside of our server.js here, using our socket right here. But now I'm going to... What? This was this easy. Passing down the server and cores options. We're going to be going over the server.js file, so if you're not interested, you can go ahead and skip. So at the very top, we're going to be requiring Express and HTTP. And Express is going to be a web application framework for Node.js, which is going to allow us to handle HTTP requests and responses. Then the HTTP is going to be a built-in Node.js module for creating HTTP servers. Then we're going to create an Express application over here by creating a variable called app, and we're going to be running this Express function. Then we're going to create an HTTP server, which is going to handle incoming HTTP requests. Over here, we're going to import and configure our socket.io. And this line right here is going to be a class from the socket.io package, which is going to be used to create a new socket.io server. And this IO is going to be an instance of the socket.io server, which we set to be configured to have cross origin, which is going to allow us to connect to the server from any URL. Then over here, we're going to handle the IO connection, and you're going to see how we can send messages from our server to the page.js and the other way around. And here we're going to be listening on port 3000, which is going to start the server, and it's also going to console log that our server is running on port 3000. So hopefully now you understand how our server.js file is going to be working. Open the page.js file and make sure that you add use client, or else you're going to get an error later on. I did minimize this window so that we don't have to go back and forth, but let's go ahead and import use effect from React. Then we're going to use it here. So use effect. And once this page.js file loads in, we're going to be sending a message to our server.js by writing socket.emit, and we can say client ready, and we can also pass in a message. So let's just say hello from client. Then if we go to our server over here, we can write socket.on client ready. We're going to get the data, and then in the callback function, we can console log the data. So let's fix this and write data. Now if we go back in here, let's reload and go to the server, we can see what we're going to get our hello from client, and try again. So we're going to get hellos from client. And now let's go back to our page.js and let's create a button. I'm just going to right click me, and on click, we're going to emit a different message. So socket.emit btn clicked, and this time let's not pass in anything. So btn clicked, I'm going to comment this one out. So server.js, and here on btn clicked, we're not going to get data. So let's just remove this, and let's just console log clicked. So now if we click the button, we're going to get clicked from our server. Another thing we can do is actually emit a message from our server. So socket.emit, and then write
do SMT. I'm not going to pass anything else, but if you go to the page.js file and write socket.on, and here we have do something, we're going to run a callback function, and here let's just console log clicked from our client right here. So if we go to inspect, go to console, press on the button, we're going to get clicked here, and also we're not going to get in the server anymore, but hopefully get the point. And I do have another client open here, so if we click it a few times here, we can see that we're not going to get this console log in this client. So if we do want to get the console log on this client, we can change this to IO, which is going to emit this to all of our clients. So if we reload both of them and press on the button here a few times, we're going to get the console log also in this client. So this is how we can send messages from our server and the client. But now let's actually start creating our application. So go to the server, remove any code that you're not going to need. Same goes for the page.js. And let's start by importing a few things. So we're going to need use state and then also use ref. Then we're going to be the exist. Then we're going to show the center page. Also, we're going to have our, but if the screen name, we can see that this would be a large mobile phone. And then once you go to a iPad, and then on medium devices and larger, it's going to be PX6. Now in here, let's add a span with py to add a left. So copy. Let's work on the, we're going to create to the server on key message with equal to the, see that it's going to get added. So let's also message work, but our own is also not going to work with and seeing what it looks like. I'm gonna show the terminal, go to the server, let's reload everything, and we can write the message here. So we can write hello there, and let's also fix the outline in a second. So let's sending the message. We can see that the content is going to be hello there, type is going to be text, and user is going to be Bobby. In focus is going, there's going to be no focus. We're going to message, and we're going to be sending the message. Now if we go back to the page.js file, we're going to be using use effect down over here. So let's go ahead and write use effect, and in here we're going to write socket.on receive message, and in here let's console log the message. And before we see if this works, we have to go down here and we have to return a function which is going to say socket.off receive message. And now if we go back in here, I'm going to open a new tab with another client, and in here let's inspect, go to the console, and I'm going to type something in here. So I'm just going to say to be server, because it's going to be a server message and it's going to be a bit different, and we're not going to pass on the user because we're not going to need it. So now let's go to the chat, and here let's write a ternary operator, which is going to also make sure that you add a class of medium px of 6 to the paragraph. And for the span, make sure that you add a TextXL and TextXL of 3. Hello and welcome to 3 hours of Nest.js tutorials and instruction. This video is made up of 6 tutorials that build upon each other much like the chapters of a book. Throughout the lessons in this video, I will mention links being available in the description below. I've compiled all of these links into one GitHub resource that you will find in the description. Hi, I'm Dave Gray, and I'm the creator of these Nest.js tutorials. You can subscribe to my YouTube channel for more tutorials like this one. You can also follow me on X, and if you're feeling generous, you can even buy me a cup of coffee. Let's get started learning Nest.js with Chapter 1. I'm excited to get started with this Nest.js series, so
lesson. Today we will add CORS, rate limiting, server logs, and an exception filter for improved error reporting, especially with Prisma that we introduced in the last lesson. Now, I've had requests to add microservices and authentication to this series, but I think those topics both deserve their own mini-series of videos. So today will be the last video lesson of this Nest.js for Beginners series, and we will have completed, and I'm the creator of these Nest.js tutorials. You can subscribe to me if you're feeling Chapter 1. I'm excited to get started with this Nest.js series. So let's start off with a few common questions about Nest.js. And let's be clear, it's Nest.js and not Next.js. Two separate things, of course. Now, Nest.js, a question that is frequently asked, is it the same as Node.js? Well, Nest.js is a framework built on top of Node.js. And so that is really the difference, kind of like Next.js is a framework built on top of React. Now, when we talk about frameworks, they're often more opinionated. They have a structured way of doing things. So let's look at this next question. What is Nest.js versus Express.js that we would commonly use with Node.js? Well, Nest follows the MVC design pattern, while Express doesn't do that. You can attempt to follow the MVC design pattern with Express, but Express is very unopinionated. And if I jump over to the expressjs.com site, you'll see they define Express as being unopinionated, whereas Nest.js is very structured and is opinionated, not unopinionated. So when we come back here, we get a little bit more detail here, and it says we use components like controllers, providers, and modules. We'll be covering all of those things. So finally, I want to answer one other question that has, why is Nest.js so popular? And we're looking at Google results for all of these, so you could look these up as well. But it's opinionated, as I said. It's well-structured architecture. It has a definite way that you do things. It has TypeScript support, so we will be using TypeScript right from the very beginning. Scalability, meaning you could, of course, scale this up, make a larger application, and because of that structure, it won't turn into spaghetti, it won't get disorganized, and it has a strong community. So you can look up a lot of things about Nest.js on the web already. Let's go to the Nest.js documentation, and here we can see I have it highlighted. Under the hood, Nest makes use of robust HTTP server frameworks like Express, and Express is the default. So not only is Node under the hood, but so is Express, and that brings me to prerequisites. You're going to understand much more of this Nest.js series and the benefits that Nest.js provides if you're already familiar with working with Node.js